our expert. And let me tell you, on this occasion, we have with us our chief guest of the day, Madam Jaspreet Talwar, IAS, Principal Secretary, Department of Water Supply and our worthy Director General, Dr. Nilima Jaraji, and our expert, Dr. Harpreet Kaur, HOD, Postgraduate Department of Fashion Designing from Kanya Maha Vidyalaya, and Dr. Loveleen Brad, Scientist B from Pushpa Gujral Science City. So a very warm welcome to all of you who are present here. And I take this opportunity to introduce our chief guest, Dr. Jaspreet Talwar. Madam is 1995 batch passed out. She is Masters in Law from Punjab University. She is Masters in Public Management and Governance from London School of Economics and Political Science. Madam has served in several departments. Welcome, ma'am, once again. Thank you. Thank you. And now, to begin with, I request Dr. Nilima Jaraji to welcome our chief guest and to give introductory remarks. Ma'am, please. Thank you so much. A very good afternoon, everybody. Madam Jaspreet Talwar, Madam Harpreet Kaur, students, teachers, all other participants who have joined us today. Many of you would actually think, why did we choose this topic? Actually, in Pushpa Gujral Science City, we often try to look at various aspects of our lives which are impacted by science. And if you think about it, a lot of people think that fashion or fabrics, etc., are way apart from science. But if you think about it, if you look at the fashion industry, it normally invokes images of beautiful people jet-setting around the world in extravagant finery, which most of the scientists usually never have, or never they try to acquire all that. But if you look at it, it is actually that science is a very important part of fashion. It's a very important part of the fabrics which we wear, the way they are produced, the way they are developed. And but it has generally been observed, and Madam Harpreet Kaur will agree with me when I say that it has usually been found that students, especially those who want to work in the creative field, normally are very happy to drop maths and science subjects as soon as they pass their high school or their +2 classes. But textile and fashion industry, like any other industry now, is undergoing a lot of disruption. And you would realize that it is not a very good strategy to leave science and maths behind, because even if you do not require a degree in science or maths to be able to be a fashion designer or a textile expert, you still need these skills, the STEM skills, you still need them a lot whenever you are in this business or in this line. There is a lot of science and technology, a lot of engineering, and a lot of mathematics skills more than ever, actually. And what we do not realize that today, if you think of buying an antibacterial clothing, which is now available in the market, you are actually buying clothes which are coated with silver nanoparticles. If you are thinking that you are a socially responsible person and you want to promote sustainable development, you would actually be using leather made of cactus or things like that. Companies like Nike, companies like Adidas are already engaged in a lot of technological war or a race for materials and technology, both in the areas of fashion as well as specifically in the areas of fabric also. High-tech materials
have arrived in the market, like magnetic fibers. They have already been introduced. And if you want to actually study materials, you have to understand material science. And to understand material science, even in fashion, you need to have a background of physics and chemistry. If you want to think about colors, if you want to change colors, you have to understand chemistry. Unless you don't do that, you will not realize that just a little bit of acidity or a little bit of alkalinity can change the color altogether. So there are different types of designer garments which have arrived in the market, and also different types of fashion which is inspired by mathematics, by geometry. I mean, you would realize that there is this designer, the famous designer Fujiwara, who actually all his designs are inspired by geometry. Similarly, I would like to share with you today the story of Dr. Laura Indolfe. She is an Italian biomedical engineer, and she is working on tissue engineering and regenerative medicine. And she has entered the fashion world. When she was asked the question as to why she did that, she said that she is trying to design materials which can support cells to trigger, to release certain factors from the body which can help help fight a specific disease. So that is the level where science and technology has taken the fashion industry to. And we need science and technology. We need a business acumen along with art if we want to be good fashion designers, good creators of fabric. Today, we would be discussing, our focus would be more on traditional fabrics. And you would all realize that even traditional fabrics, there is a lot of fabric which is inspired by science and technology. For example, what materials to use, what seasons to wear what. All this is because we understand the science behind it. So without saying anything more, I would not like to come between the chief guest and the speaker of the day. And I am extremely grateful to Madam Jaspreet Talwar for agreeing to be with us. Ma'am, one of the reasons why we requested you was that you are a woman. And this program is actually targeted to women because it is generally perceived that women are more fashion conscious than the men. Although many of us are not very fashion conscious, but even then, yes, we do have a better acumen than the men around us. So a very warm welcome to you. Thank you. We are grateful that you are here with us today. I'm also extremely grateful to Madam Harpreet Kaur, who very readily agreed to speak at this program. Welcome, Madam Harpreet. I'm also grateful to all the students, to all the other participants, to the teachers who are here with us today. And we hope we'll take back a lot of knowledge on science and fashion with us as we go back. Thank you very much. Thanks a lot, ma'am. Thank you. And yes, now I request our chief guest, Jaspreet Talwarji, to give inaugural remarks. Please, ma'am. Thank you, Dr. Jairat, Dr. Harpreet Kaur, and all the participants in this, program, webinar. Well, let me tell you, when Dr. Jairat asked me, Nilima Jairat asked me to join for this, my first question to her was that I don't fit the bill, that I don't know much about what subject you are covering, so why should I be here? Yes, I can come and listen to it to understand what is the science behind it. But I think she coaxed me actually into it because we work with Dr. Jairat, and of course she has a very vast experience other than this science for fabric. So
traditional fabrics and fashion in India, she's also been working with us for all the participants, that she also works with us on environmental issues in water management. So she gives us all the the know-how of how we should be managing our water treatment plants, what are the issues that we should look at when we are building new projects and things like that. So so I could not say no to Dr. Jairat, but let me just share that I, like all of you, are only a lover of good fabrics, but I don't have too much of knowledge on them. So like any other, maybe a lot of, like she said, women are interested. I love the fabrics because in India, I think probably that's why I say we are one of the richest countries as far as fabrics are concerned. And these are traditional fabrics which you see from across India. So, when you travel, luckily being in the IAS gives you an opportunity to travel a lot. And when we joined the academy, we were taken on because my father was in the army. As it is, we had traveled a lot in India. But, when we went on a 2-month tour of India, it is called the Bharat Darshan. And our only excitement used to be that whichever state we go to, we must pick up the fabric of that state, whatever it is. So whether it was a sari or whether it was a suit, we must buy that. And let me tell you, from north to south, east to west, India has so many fabrics, so many types of fabrics, so whether it is our silks, it is our cottons, whether it is woolen material, there is no end to it. And being in a place like Chandigarh, I don't know if everybody has that opportunity, but we keep having these exhibitions where the artisans from all over India come and put the exhibition, and you have an opportunity to see the type of colors, the fabrics, and all new kinds of things which are coming and also merging between the different regions. So while you might have designs of Rajasthan printed on the fabric which is being produced in Jharkhand, so there is also a mixture today when you look at the kind of things. But I never, even though I'm a science student, Mrs. Jairat, let me just say I've done my BSc before doing my law, but I never looked at science from the point of view of fabric. I wish I had. Maybe my intentions of shifting over to law would have changed, because I did not find physics interesting at all, nor did I find maths very easy to do. But now that you raise the point, I do realize that how important science is for understanding other aspects of life also, other than what we were traditionally taught to believe, that it was only engineering or only medicine. But there are so many other areas where I think it would be helpful. Now that you tell me, if I look back when we were small children, my mother, I remember, was a work, she would teach, she was a teacher, but yet I remember she would do stitching herself. And she did a course in stitching where I remember it was all diagrammatic. So she would have these, measures like a scale and other things to do to do what is called the cutting and tailoring. So in cutting and tailoring also, need mathematics, you need geometry, your angle, how much, what is to be cut. So there is so much of learning to do. And like you said, that even within fabrics, there is so much to understand. I'd only like to share that, I've had the experience of going to, Bhuj in Kutch district of Gujarat. And, luckily in a lot of states today, they are promoting because there are two sides of, let's say, the industry. One is the unorganized sector, where we have all the handlooms, the artisans, and the people who are producing fabric, which is being produced at the local level. Just as Sade Punjab, which we tusi dekha hona hai, Khaddar de utte we are doing jeda baag banda hai. Okay, so there are traditional, materials. Whereas on the other hand, we have the high-end industry, which is textiles, where we have, all these mills which are producing textiles. So there are two ends of it. How do we bring them together? What is the science behind them? Even the third thing is silk. And you'll be surprised to know, I was surprised to know, we all know that silk is produced through sericulture and it is again biology, should I say, from that science of zoology in that sense. How do you produce the silk thread, and then how the thread is made into fabric? So I saw in Bhuj that time, using this thread, how they are using the local thread to do all these shawls which you see now, which are the traditional Gujarati shawls. All that is being produced there.
But I did not know, and I would always believe that silk is being produced mostly in these southern states, because to see silks, normally South India, there is some silk being produced even in Jammu and Kashmir, or in the areas such as Madhya Pradesh, Jharkhand, and others. But I did not know that we have sericulture in Punjab also, and there are many places. So in fact, the other day I was having a discussion with one of the officers who looks after, who's the director of horticulture in Punjab, and she's from the Forest Service. So she was telling me that we have started producing in Pathankot and other areas silk in Punjab, which is now. So I said, it is very nice for us to know that we are going to be producing silk in Punjab. She says, no, ma'am, it has been going on, but you don't know about it. Maybe you have never seen it. So within India also, there are so many kinds of fabrics that we are producing, even in Punjab. So I think for me, it's a great opportunity and a learning to know what are those fabrics, how does science come into picture. And I don't think I am the right person for that. I think Dr. Harpreet is here as an expert, so she will be able to share with you. But I think the idea of the seminar that you have kept, Mrs. Jairat, is actually to bring science to children in relating it to real life, because for us science was always in books and that was where it was left. But to be able to understand how science comes into play in every aspect of our life, and especially fabrics, which is something very interesting. So I think it's a great way of learning, that even for the fashion industry, if you do, like you said, do continue with science in your class 11 and 12, so that you have more options when you go into any sector that you want to work in, whether it is the fashion industry, whether it is even into garments, or production of these traditional wear. Because even if we get fabric, how to enhance the fabric, you would have seen that in Punjab we have Fulkari. So there are lots of NGOs who are working towards it, but probably the recognition it should be getting. We were only discussing very recently with Mrs. Jairat. I was discussing that, today what is traditional to a particular area can be what is called geotagged with that area. It becomes a geographical indicator that this product is produced in this part of the world only. So it becomes like an indication. So for example, I think when she was in science and technology, the government was able to get the geographical indicator for Fulkari. Fulkari is known from Punjab. But when they started doing it, she mentioned that even Pakistan people said, you cannot take a geographical indicator because Fulkari is done in Pakistan also. So therefore, that traditional, let's say, textile is with the embroidery is available even in Pakistan. But they were able to distinguish Pakistan from India by saying, here we do it on brick colored. I was reading that document which you had made on brick colored khaddad, whereas they are doing it on black khaddad. So that is how they kind of distinguished it and said that, yes, we will give you a geographical indication for Fulkari. So similarly, I think there is so much outside in that world where we can go and do something, and also unless we have an exposure. So I think I would like to congratulate the director of the Pushpa Gujral Science City, that you are taking this initiative to open the minds of children across the state, that there are so many areas in which they can work with science as a background. So making science interesting. So I would wish this seminar all the very best, and I hope you all take away something. Honestly, I have nothing much to contribute, because I can only, like I say, appreciate. I do appreciate textiles, fabrics. I'm a great collector also of them, but I don't think I go into the science behind them, and that I leave to you, Dr. Harpreet. So we'd love to hear from you. Thank you. Thank you very much, ma'am. And yes, ma'am, I would like to inform you that at Science City, we always try to relate science with day-to-day routine. So we always try that student, they must learn that how science plays a big role, a vital role in daily routine, rather in daily life. So this is one motive. Another is that you are always an inspiration for those women who want to do something in their life. And at Women Technology Power, our sole motive is to empower women, and you are a big motivation for us. So thanks a lot for joining us. And yes, moving further, as you all know that we have our expert with us, Dr. Harpreet Kaur. And before I hand over the floor to her, here's a brief introduction of Dr. Harpreet.
She has 20 years of experience in the teaching profession as a faculty of fashion design. Besides her passion for teaching and designing, she has a sizable number of paper presentations and publications in journals of national and international repute, including Scopus journals. She has organized many grand fashion shows under the nomenclature Sukriti, the recent being a collaboration with the prestigious Times of India group. She has also written a book on Guru Nanak Dev Ji's Sakhis, inspirations and teachings. So very warm welcome, ma'am. Please interact with the audience, with the participants. We'll take queries at in the end of the session. So floor is all yours. Thank you, ma'am. Thank you, dear Kamaljeet. Very good evening formally to the chief guest, Ms. Jaspreet Talwar, ma'am, Principal Secretary, Water Supply and Sanitation. Ma'am, you were a huge, you were repeatedly saying that you don't know anything, but well, you have a huge knowledge on this subject, and I must compliment you on for that. And thank you for being the chief guest for this day. And my next thanks and goes to Dr. Neelam Jared, Director General, Pushpa Gujral Science City. At the outset, ma'am, I would like to thank you for providing me this opportunity and also, giving me this topic because I have my master's and my, passion and my doctorate in the field of sustainable fashion. So when we started talking about it, we had thought, Jay, we had thought that we would be talking about sustainable fashion, but then she wanted me to connect it with science, which was very challenging for me also, though we live it and we breathe it and we do it, which I'm going to talk about as I take the course. And thank you, dear Dr. Loveleen Brar, Scientist B, Pushpa Gujral Science City, for facilitating this and being the moderator, the friend, the guide for the whole process. And Kamaljeet Kaur, AEO, Pushpa Gujral Science City. I also acknowledge the presence of my dear colleagues, friends, family, and well-wishers to here. And before much ado, I mean, ma'am, Dr. Neelam, you had talked about this, that we leave science, the fashion students. I was myself a science student and I, in my +1, +2, I had, medical because I loved science. So, and it was a huge shock for the family. Okay, how is this girl who is a topper and, a good student, how is she going into fashion designing? But well, to honestly admit, मैं गुरुद्वारे भी जाती सी, so I used to only keep watching clothes of people. So I mean, my passion took over me. So well, here I am. And, when I did my PhD also, people would ask me, Acha, isme PhD hoti hai? Fashion mein bhi PhD hoti hai? And I would be like, oh, come on, I have got it in the science discipline. I mean, we have done BSc, MSc, and my PhD is also in the sciences. So yes, of course, इसमें PhD होती है. और जो आप नए fabrics हर रोज देख रहे हैं दुनिया में, smart textiles आ गए हैं. Neelam ma'am has very beautifully, given us a broad outline of where the world is moving on to, where we have come to. So, but today the topic is about the traditional handicrafts and what they have our history of the traditional textiles. So I would here like to say that I like a participative kind of interaction. Because you are all muted, so I would request that if you could just type your answers in the chat box. I'm addressing the students because basically our intention is to, connect with the students and the laymen, the common people, and sensitize them about the beauty of fashion and the science behind it. So kindly, and I would also like to ask what the mode of, this thing you want it to be. Is it like purely English, or is it Hindi, or is it Hinglish? I mean, if you could just type in the chat box, I will carry on in that flow. Whatever you say, dear students.
It would be English. English. Okay. Okay. English. English. Okay. Right. So Or English it you is. can also say Pinglish. Pinglish also, but I believe some students from Pan India are also there. Some Yes. people. So I would try to keep it to English, but asi Punjabi aa gaya, kite kite aa jayegi. So In fact, in most of our programs, we encourage the speaker to speak both English and Pinglish. right, ma'am. So bang on. I am on the go. So here we go. I'll start sharing my screen with your permission, ma'am. Yeah. Please. Thank you. So are you able to see my screen, everybody? Yes? Okay. Okay. So coming on to the topic, formally, I would like to introduce, it is the science behind the traditional fabrics of India and the fashion world. So it is in association, as you all know, with the Women Technology Park of Pushpa Gujral Science City. So first of all, I'd like to ask you all, what is science? How do you define science? You can see it on the screen. Well, I have picked up the definition, which tries to talk about that science is about systematic and organized body of knowledge. There has to be a system. It should be, there has to be reliability and validity. हम जो भी काम कर रहे हैं वो बार बार रिलायबल मींस वही रिजल्ट्स आने चाहिए और वो वैलिड होने चाहिए. हम चाहे 10 बार वो एक्सपेरिमेंट करें, 10 बार वो चीज करें, 100 बार करें, 1000 बार करें, that same kind of results should follow. So then it is called as scientific knowledge. And otherwise we just think कि experiment करना is science, है ना? Mathematics calculation करना is science. बड़े बड़े astronomy, and physics and microwaves and chemistry solutions, that is science. But no, my dear students, science is how natural things behave and what we know about them, the study, the formal study. Even if, like ma'am was talking about Fulkari, right? She just mentioned Dr. Talwar, Jaspreet ma'am was talking about the Fulkari and the GI index. Well, if somebody documents Fulkari, वो जाके कारीगरों के पास जाके बात करें कि आप कैसे बनाते हैं, उसको एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहेंगे हम, एंड इट इज आल्सो अ साइंटिफिक स्टडी, right? So science is not limited to just the physical or the experimental method of science. There is more to science than that. Do we all agree with this definition? Then only we can go ahead. So okay, so moving on. Now, how will be the flow of this talk today? Well, we are going to talk about in the first section about the manufacturing of the textile fibers. So textile fibers कैसे हैं, वो कैसे बनते हैं, and up to the apparel stage वो कैसे आते हैं. So second section will overlap, that is the manufacturing of the traditional apparel with the first section. I will simultaneously take them. थर्ड इज जैसे डॉक्टर नीलिमा जेरत ने भी बोला था कि एस्थेटिक्स, हम कौन से सीजन में क्यों कौन से कपड़े पहनते हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशंस क्या हैं, उनके डिजाइन्स के पीछे उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं जो हम यूज करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स we were also given an outline about the Loveleen ma'am is from anthropology department, so she would understand कि ये सारे measurement का हमको सबसे अच्छा क्या चाहिए. Whenever we think about clothes, what do we talk about? Why is couture so famous? Because they give you perfect fitting. And India में we are so lucky, we have गली गली में couture, है ना? We tell the tailor कि हमें इतना गला चाहिए, इतना slit चाहिए, है ना भैया, ऐसे रंग का इसके ऊपर ऐसी lace चाहिए. So but at the end of the day, what we really want from our clothes is the perfect fitting. And how do we get it? We get it because we understand the body's anthropology, and when we combine it with measurement, then it becomes a science. The science of measurement of human body to make patterns, to make dresses which have good fitting, right?
And of course, we use all the scientific equipment to do that. When I reach to that, I will talk about it. And then, of course, Nilima ma'am told us about the current trends. I mean, there is an endless topic on this, on what is going to happen in the whole world today. And as Talwar ma'am also pointed out, that there is a combination, दो चीजों को mix कर रहे हैं, तीन को mix कर रहे हैं, किसी का textile उठा रहे हैं, किसी का fabric उठा रहे हैं, किसी का color combination उठा रहे हैं, and they are producing new stuff. So we'll be all dealing with this. So now the first fiber that we are going to talk about is, which is as old as हमारी हड़प्पन, है ना, Mesopotamian civilizations, Mohenjo-daro, वहाँ पे हमें cotton के, we have found pieces, right, in the excavations. So the flow, this flow would also be, there for all our fibers. Almost all our fibers follow a similar kind of flow. So cotton hai kya basically? Let me first tell you that India is the second largest exporter of cotton. It is a place of pride for us, and besides only after North America, the US, right? And Egyptian cotton भी बहुत famous है. अब ये cotton है क्या? सबसे पहले हमको इसको, ये आप steps एक बार मैं नाम बोल देती हूँ, फिर मैं आपको steps समझाऊंगी. Growing and harvesting means हमने उसको उगाना है और उसको harvest करना है. Ginning, baling, ये मैं आपको समझाऊंगी. Opening and picking, carding, combing, उसको कंघी करके साफ करना, समानांतर करना, slivering, drawing, roving, ये सब उसको धागे के प्रोसेस है. स्पिन करके धागा तैयार करना, उस फाइबर में से उसकी वीविंग करना, मींस उसको कपड़े की शक्ल में लेके आना, एंड देन ऑफ कोर्स डाइंग एंड फिनिशिंग. नाउ this is how your cotton pod looks like. Isn't it beautiful, like snow? It reminds me, I'm from JNK, Srinagar, and it reminds me of the beautiful snow. So हमारे ट्रेडिशनली क्या होता था, हाथ से पिक करते थे, लेकिन अभी देयर आर मशीन्स, बिकॉज इसको खराब नहीं होने दे सकते, एंड विद इन 2 days इट हैज टू बी पिक्ड अप, क्योंकि अगर इसके ऊपर त्रेल गिर जाएगी, है ना, आई मीन ड्यू पड़ेगी या इसके ऊपर डस्ट पड़ेगी, इट विल गेट स्पॉइल्ड. सो ये सिर्फ 3-4 फीट का कॉटन का प्लांट होता है, ये फाइबर होता है. एंड लेट मी टेल यू, जो कॉटन है वो एक स्टेपल फाइबर है. स्टेपल, एस फॉर स्टेपल, एस फॉर शॉर्ट. तो हम ये याद रखेंगे कि ये जस्ट फ्यू इंचेस का फाइबर है, बहुत छोटा फाइबर है. सो इसको धागे की शक्ल में लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, राइट? सो इस फटाफट इस कॉटन पॉड को हम पिक कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, राइट? इसकी जब ये मैच्योर हो गया, ये देख रहे हैं आप जो सेकंड पिक्चर में फट गया पूरी तरह से, है ना, उसके साइड के सेपल्स फट गए हैं, राइट? और अब हमें पता है कि पहले हमारे पास ट्रेडिशनल कॉटन होती थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत इसके एडवांस्ड वर्जन्स हैं, है ना? सो ये देखिए, जो हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो इसके कॉटन के अंदर क्या होता है, देयर आर सीड्स, यस, जिनसे हम कॉटन सीड ऑयल निकालते हैं. ओके, तो आप ये ट्रेडिशनल मेथड देखिए, वो कैसे एक लोहे का उसके हाथ में, वो देख रहे हैं आप, एक देयर इज जस्ट अ क्रूड इंस्ट्रूमेंट लाइक अ कील बड़ा सा, राइट? एंड दे आर रिमूविंग द कॉटन सीड्स फ्रॉम द मेन फाइबर. तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी दैट द फाइबर इज ऑल्सो, of course it's our primary produce, but the seed is also very important, and it is our secondary produce. Cotton seed oil banta hai, and there's a whole flourishing industry. We even it is an edible oil, right? So we can use this oil. So is seed ko hair se अलग कर दिया, कॉटन फाइबर से अलग कर दिया. एंड ये जो आप सेकंड प्रोसेस देख रहे हैं, हमने सबने रजाइयां बनवाई, आजकल ठंड हो गई, सब रजाइयां ले रहे हैं, यस. सो ये फ्लफी कर रहे हैं, इसको पिंजना कहते हैं, राइट? इसको खोल रहे हैं, ओपनिंग अप कर रहे हैं, राइट? और ये फाइबर्स को खोल रहे हैं, और ये देखिए इसके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट देखिए. नाउ द साइंस बिहाइंड दिस वाज सो सिंपल. आई मीन, मैं कहती हूँ साइंस उसमें है कि छोटी छोटी चीजों को आप साइंटिफिकली इस्तेमाल करें. आई मीन, फ्रॉम वेयर हैव वी स्टार्टेड, एक छोटे से व्हील से. व्हेन आई कम टू द लेटर यू विल सी सिंपल, हमने जो व्हील है वो इन्वेंशन कैसे यहाँ अभी तक यूज हो रहा है ट्रेडिशनली, है ना, टू क्रिएट क्लोथ्स. सो ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, लकड़ी के उसके ऊपर, हुक्ड के ऊपर एक धागा लगा हुआ है, और दूसरे उससे वो उसको पिंचता जा रहा है, खोलता जा रहा है. एंड इससे क्या हो रहा है, डस्ट रिमूव हो रही है, जो लीव्स थे, जो डेड मटेरियल कोई और था, वो सारा रिमूव हो रहा है, एंड कॉटन हमारी ओपन अप हो रही है.
right? Now ये again वही process है, and ultimately we reach to हमने spindles अपने तैयार कर लिए. वो कैसे हुए थे? We all see this picture. Do we know who is on the screen right now? Everybody? Of course. ये धागा, ये humble cotton है ना, छोटा सा फाइबर जो तंतु था, उसने हमें कैसे जोड़ा, हमारे पूरे देश को बांध दिया इस फाइबर ने. With the help of the father of our nation, महात्मा गांधी जी, हमने चरखा, सिंपल चरखा जो हमारे पुराने वर्जन ऑफ तिरंगा के ऊपर देखा जाता था, इसने हमारे पूरे देश को बांधा. इट वाज अबाउट about emancipation of the people. They wanted to make their own clothes and this united us. So एक ये simple machine जो थी, है ना, the science behind the simple machine of the charkha, which is basically a spinning wheel, and it created. अब ये जो technically ये क्या काम कर रहा है, जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं हम उनको ट्विस्ट कर रहे हैं आपस में और धागे की शक्ल में लेके आ रहे हैं और उसको फाइन बना रहे हैं. ये काम हमें कुछ धागे बनाने के लिए, उनके कुछ स्पूल्स तैयार कराने के लिए हम सिर्फ 2 या 4 या 10 स्पूल्स एक दिन में बना पाते थे. लेकिन आजकल देयर आर मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ साइंस वी हैव moved on to, I mean, there are machines which are पर सेकंड में कितने मीटर्स धागा तैयार हो रहा है. एंड पर सेकंड में जो नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, वीविंग, इट्स अ हैंडलूम, खड्डी है. इसके बिहाइंड देखिए साइंस. अब एक ये छोटा सा इक्विपमेंट है, राइट? आप इनके हाथ में देखेंगे एक शटल पकड़ी हुई है जिसमें धागा जो है, जब हम वीविंग करते हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वाप का धागा. वाप इज योर ताना एंड वेफ्ट इज योर बाना. सो ताना और बाना जब इंटरलेस होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कपड़ा तैयार होता है. दैट इज बेसिकली वीविंग, राइट? और उसमें आगे आगे फर्दर है ना, डिजाइनिंग है, अलग तरीके की फैब्रिक कंस्ट्रक्शन है, अलग उसको अप टू द ब्रोकेड्स हम जा सकते हैं, है ना, उसमें कितना कॉम्प्लिकेशन ला सकते हैं. और ये सब हमारे हैंडलूम पे होता था. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फैब्रिक्स वर मेड इवन ऑन हैंडलूम ओनली. सो ये जो शटल का धागा है ये हाथ से मूव होता था. और कई हमारी इंट्रिकेट ऐसी फैब्रिक्स हैं जिन पे सिर्फ, बिलीव मी, 1 inch of fabric is prepared in a day. Can you imagine the amount of labor? और मेहनत हम उनको क्या देना चाहते हैं? हम कुछ नहीं उनको पे करना चाहते एज कंज्यूमर्स, राइट? हमें लगता है बार्गेनिंग कर लें, है ना? सो बट वी मस्ट अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वर्क एंड हार्ड वर्क दे हैव पुट इन. जबकि जो पावरलूम्स हैं वो hundreds of meters of fabric they are creating within a few hours. So that is the kind of yonric difference that there is between the two types. So next, as ma'am has pointed out, there is a GI mark, but there is also a handloom mark. How do I know I'm selling, I'm buying the right product? How do I know as a customer? मुझे क्या पता? कोई मैंने आपको बताया हैंडलूम बनाने में मेहनत लगती है ना? इट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट. एक आर्टिजन ने उसमें अपने कितने दिन लगाए हैं, कई बार कई महीने लगाए हैं उस आर्टिकल को प्रिपेयर करने के लिए. और उसी की इमिटेशन पावरलूम में बहुत आसानी से बनाई जा सकती है. So how am I as a customer sure that the price, I'm paying a higher price for the handloom? So then am I sure that I'm getting the correct item that I've paid for? Yes. So ये आप देखेंगे इसमें ताना बाना जो मैंने आपको बताया वो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इंटरलेस करके दिखाया है. So this is the assurance that you're buying the real handloom. And Handloom Day, of course, is celebrated on 7th August, right? So here I am, encouraging all our participants to invest in handlooms. And as, Jaspreet ma'am said, she's a collector, ma'am. Congratulations to you. And we need more people like you. I'm one collector, but then it is my field. It is heartening to know that you are also collecting. We must encourage our artisans. That's the sustainable way to go. Next is dyeing. अभी एक आप नीचे पंचलाइन देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की लिखिए, live and let die, right? So ये इंडिगो डाई बाथ्स हैं, right? आपको ये पता है हमारी इंडिगो चंपारण की कहानी से भी जुड़ा है ना, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ा है. पर इसके पीछे साइंस क्या है? I mean, ये नेचुरल डाइज जो मैंने आपको बात कही, live and let die, means
लिव क्यों, जीना क्यों इंपॉर्टेंट है? जी हम तब पाएंगे जब हम एलर्जीज से दूर रहेंगे, कैंसर से दूर रहेंगे। हमने बिलियंस ऑफ कलर तो क्रिएट कर लिए केमिकल डाइज की मदद से, राइट? यू नेम इट, मेरा वाला येलो, मेरा वाला ग्रीन, मेरा वाला ब्लू, है ना? वी गेट इट, बट देन व्हाट इज द प्राइस दैट वी आर पेइंग फॉर इट? We are paying the price with bad health. So what happened? We have to go back to the natural wisdom, the science of the people who understood that the natural dyes, you know, DYE, we will live only when we DYE, not DIE, right? So we will not die. Yes. So हमें ये dyes चाहिए. We need to go back to the culture of natural dyeing. डाइज कहाँ से मिलती थी? ऑफ कोर्स प्लांट्स, है ना, ये आपको मैंने बताया। जैसे इवन हीना जो हम हाथ रंगने के लिए लगाते हैं, पोमोग्रेनेट, आपके अनार के छिलके, देन आपके मिनरल डाइज जो हैं, आपके रस्टेड आयरन के पीसेस से हम बनाते हैं। वेजिटेबल्स में आपके हल्दी और आपके यू नो मैडर, एंड देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ प्लांट्स, फ्लोरल प्लांट्स जिनको हम यूज कर रहे हैं। मेरी क्लास में वी डू नेचुरल डाइंग आजकल। सो माय स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम मैं मेथी काट रही थी, क्या मैं उसकी डाई कर सकती हूँ? सो यस वी कैन। कॉफी, टी, एवरीथिंग। आप सोचिए जो दाग लगा रहा है आपके कपड़े पे, वो चीज एक अच्छा कैंडिडेट है एक नेचुरल डाई बनाने के लिए, राइट? सो वी नीड टू एक्सपेरिमेंट। और the science behind these dyes was, can you imagine, for a simple dyeing process it used to take days and there was a proper system. इतने कपड़े के लिए इतनी डाई और इतने प्रोसेसेस, इतने स्टेप्स, क्योंकि इसमें सपोज मॉर्डेंट्स डालते हैं। अब मॉर्डेंट क्या है? जो अब हमने डाई तो कर लिया, आप बोलते हैं, मैम बोल रही है हल्दी लगा दो और यू नो डाई हो जाएगा। ऑफ कोर्स डाई हो जाएगा, लेकिन आप धूप में डालेंगे, व्हाट विल हैपन? धूप विल ऑक्सीडाइज इट और वो उड़ जाएगा, राइट? आप बोलेंगे हरप्रीत मैम ने तो गड़बड़ कर दी, मैंने तो इतना सुंदर पीला डाई किया था, नाउ व्हाट वाज आई हैव? वी हैव टू फिक्स इट टू द क्लॉथ. वी नीड अ मॉर्डेंट, वी नीड अ फिक्सर. So there was a science behind it, there is a science behind it which is being studied. जैसे alum is a simple, you know, mordant which will, mordant क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपका ये कपड़ा है, ये डाई है, इन दोनों की आपस में एफिनिटी नहीं है, ये जुड़ नहीं रहे हैं। आप इसको लगाते हैं, ये टेम्पररी इसके ऊपर आ जाता है, राइट? अब हमें चाहिए कोई थर्ड एलिमेंट, कोई विचोला, राइट, जो इनका रिश्ता कराएगा। सो मॉर्डेंट इनका रिश्ता कराने वाला है। इसका ब्लॉक, मॉर्डेंट का जो ब्लॉक है वो डाई में भी फिक्स हो जाता है और दूसरी तरफ वो फैब्रिक में भी फिक्स हो जाता है। सो इट फॉर्म्स अ कनेक्टर, कनेक्शन बन गया। तो अब आपकी डाई, अब आप हल्दी से डाई करके डालेंगे सुखाने के लिए तो रंग नहीं उड़ेगा और आप हरप्रीत मैम को गलत नहीं बोलेंगे, राइट? सो द प्रोसेस हैज टू बी correct, and there's a whole system in which, you know, these dyes are being done. There's a whole science behind it. Cochineal dyes are from the लाख, आपने सुना होगा, आप स्टैंपिंग करते हैं, सील करते हैं, राइट? तो एक छोटा सा कीड़ा है जिसके, you know, so many hundreds of these कीड़ाs had to be crushed, dried, and उनके अंदर से डाई निकलती थी. All the shades, beautiful shades of reds and, you know, browns and rust used to come from there. आपने हमेशा पुरानी मूवीज में देखा है, द पर्पल इज ऑलवेज द किंग, है ना? आज मैंने भी थोड़ा पर्पल करने की कोशिश की, अपने आप को रॉयल्टी दिखाने की। यस, सो द पर्पल कलर वाज एसोसिएटेड विद द रॉयल्टी। व्हाई? क्योंकि ये रंग हमें मिलता था फ्रॉम दी, देयर इज अ शेलफिश, यू नो, इट्स उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था। वी नो ऑल दी ऑक्टोपस फैमिली, ज़ूलॉजी हम सब अंडरस्टैंड करते हैं, दे एमिट डाइज एज कैमोफ्लैज, है ना? तो ये उनके अंदर डाइंग एबिलिटी थी। तो इंसान ने अपनी ऑब्जर्वेशन से, पुराने जो हमारे लोग थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन से समझा कि इनको कैसे करना है। और ये डाइंग के प्रोसेस को, और देखिए, आप कहते हैं कि ना फलानी नदी में हम डाई करते हैं, वहीं की नदी से रंग पक्का आता है। नाउ कैन समबडी टेल मी कि वहीं से क्यों नदी, उसी नदी से क्यों रंग पक्का होता है भाई? बिकॉज उसके अंदर कुछ यू नो मेटालिक सॉल्ट्स हैं, राइट?
सो वो मेटालिक सॉल्ट्स फिक्स करने में डाई को मदद कर रहे हैं, उसको पक्का करने में या उसका रंग डीप करने में, गहरा करने में मदद कर रहे हैं. सो देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट जो शायद ये टेक्निकली नहीं समझते थे, है ना, क्योंकि मैंने बोला आपको 3000 साल पुराना हमारा ये कल्चर है, कई चीजें हमारी 5000 साल पुरानी है. सो ये जो हमारी धरोहर है, मे बी दे डिडंट अंडरस्टैंड द केमिकल्स, है ना, कि ये फलाना और ये टर्म्स जो मैंने आपके साथ यूज किए, ये फिक्सर है, ये बाइंडर है, ये मॉर्डेंट है, वो नहीं शायद समझते होंगे कि केमिकल एक्शन क्या है. लेकिन दे वेरी वेल अंडरस्टूड द प्रोपोर्शंस के कितना कौन सा क्या लेना है और कैसे उसको फिक्स करना है, राइट, कलर को पक्का करना है. और ये हमारे बेस्ट पार्ट है जो मैंने आपको कहा, दे आर वेरी स्किन फ्रेंडली एंड वेरी गुड फॉर अस, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू सरफेस डेकोरेशन. जब भी हम कपड़ा बना लेंगे उसके बाद हमें उसको डेकोरेट करना है, राइट. सो यहाँ आप देख रहे हैं ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक यूज हो रही है. आई हैव जस्ट पिक्ड अप अ फ्यू टेक्निक्स. जैसे जसप्रीत मैम ने भी बोला एंडलेस पैन इंडिया. आप मैम, मुझे नहीं पता था कि पंजाब में भी सेरिकल्चर होता है. थैंक यू फॉर दिस. आई विल एक्सप्लोर दिस नाउ मोर, यू नो. सो आप देखिए कितनी हैरानी की बात है. जैसे मैंने मैम को शुरू में भी बोला, नीलिमा मैम को, वी आर लर्नर्स, हम रोज लर्न कर रहे हैं इस फील्ड में. हर प्रांत, हर जगह में देयर आर सो मेनी क्राफ्ट्स एंड दे हैव अ साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग देयर वर्क. सो मूविंग ऑन टू लकड़ी कौन सी लेनी है ब्लॉक्स में, कैसी होनी चाहिए. जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है, इसमें कितने 7 तरह के ब्लॉक्स लग जाते हैं, एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर. तो इसमें जो डाई बनती है, वो फिक्सर, बाइंडर, यू नो, रेशियोज उनके कैसे मिलाए जाते थे, देयर वाज ऑल, दीज आर ऑल, यू नो, प्रोसेस वाइज चलते हैं, राइट. पहले कपड़े को कैसे ट्रीट करना है, हाउ टू, यू नो, I will not go into the nitty-gritties of each because each is, you know, I will just give you an overview of the whole process, because if I go into even one study, it will take an hour each. So I'll give you an overview of all these. Now let's come to Kalamkari. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में श्री कलाहस्ती एंड मछलीपट्टनम में ये किए जाते हैं. सो व्हाट इज दिस? इसके अगर अब मैं आपको ये देखिए, आप प्रोसेस देख रहे हैं, आप फर्स्ट पिक्चर पे ध्यान दीजिए. लुक एट द ब्रश दैट दे हैव. आई मीन उसमें से कलर, वो थ्रेड को बांधा गया और धीरे धीरे टपक रहा है. डोंट यू थिंक इट्स अ साइंटिफिक ब्रश और इसका कॉपीराइट होना चाहिए? यू नो, हम छोटी सी इन्वेंशन करते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली आई विल टेल यू, जो इमली, टैमरिंड है, उसकी लकड़ी को ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर पे हाफ बर्न करते हैं, चाकोल बनाते हैं, और जो पहली आउटलाइनिंग होती है वो उस इमली की लकड़ी से की जाती है. दे हैड देयर इंडिजिनस, यू नो, तो वो राइट टेम्परेचर, ये साइंटिस्ट का काम है ना, राइट टेम्परेचर होगा और वो राइट लकड़ी जलेगी, उतनी ही जलानी है, ना कम ना ज्यादा, तो इट विल एक्ट एज अ मार्कर, राइट. और ये जो आप ये नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, यू विल सी द फैब्रिक प्रोसेस ऑफ फ्लो. तो जनरली कलमकारी कॉटन पे की जाती है, लेकिन सिल्क पे भी हो सकती है. सो इसमें अराउंड 17 to 23 स्टेप्स थे. एंड डू यू सी द फर्स्ट स्टेप? काउ डंग. आई मीन इट इज यूज्ड एज अ ब्लीच एंड देयर इज वाटर एंड मिल्क एडेड टू इट. सो कपड़े को सबसे पहले तैयार करने के लिए ये डाला जाता था. एंड मतलब देयर इज अ प्रोपोर्शन के 40 मीटर कपड़े में इतने ग्राम डंक डलेगी, इतने लीटर दूध डलेगा, तो जाके सही आउटकम आएगा. ये भी एरिया टू एरिया इनके अपने अपने प्रोपोर्शंस फिक्स हैं, बट इट इज अ रिलायबल साइंस, क्योंकि ये हर बार उतना ही प्रोपोर्शन है और उतना ही रिजल्ट आएगा, और वही पर्टिकुलर जो आप ब्लू, रेड, ग्रीन आगे कलर चाहते हैं वही मिलेगा, राइट. सो आगे आप देखेंगे ये सारे ये स्टेप्स हैं. एज आई टोल्ड यू, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच, बट आई वुड जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि देयर इज अ साइंस बिहाइंड, I mean scientific stepwise, and anybody can replicate this. Science की क्या ब्यूटी है कि कोई भी चाहे तो उसको रेप्लिकेट कर सके. तो अगर हम और आप जाएं और वहां ट्रेनिंग लें, और अगर हम इस स्टेप्स को रेप्लिकेट करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल आल्सो गेट द सेम रिजल्ट्स. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलेटली, आप जानते हैं ना, स्टैम्प इसके लिए वो की, राइट, लॉन्च फॉर कलमकारी. अभी दूसरी आप पिक्चर जो देख रहे हैं, दैट इज अबाउट कांथा.
अभी हम बोलते हैं, अब आज हमें समझ आ रहा है, वी इंडियंस आर तो वेरी थ्रिफ्टी, है ना, हम तो अपनी टी शर्ट लास्ट में होली तक खेल के पोचा भी बनाते हैं, है ना, बट दुनिया भर में पीपल आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी. लुक एट आवर कांथा, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सरफेस डेकोरेशन. कपड़ा तैयार हुआ तो मैंने आपको बोला या ब्लॉक प्रिंटिंग कर लेंगे या डाइंग कर लेंगे, है ना, या हम कलमकारी कर लेंगे, मींस फैब्रिक पेंटिंग टाइप कर लेंगे. यस, कलम एंड कारी, कलम इज अ पेन एंड कारी इज अ क्राफ्ट, राइट. तो कलमकारी कर लेंगे या हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे. तो मैंने सिर्फ कांथा पिक किया. देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज पैन इंडिया. पर हमने क्यों कांथा पिक किया? क्योंकि ये साड़ी के धागों में से मतलब जो बॉर्डर है उसमें से कढ़ाई के लिए धागे निकाले जाते थे, एंड women used to sit and make these articles, right? So aesthetic principles जो हम scientific principles कहते हैं, color combination सही हो, ऐसा हो वैसा हो. When you look at our handicrafts, they are so beautifully, the sustainable science is all there in our handicrafts. अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे फाइबर पे, दैट इज सिल्क. अब सिल्क में आपको बताना चाहूंगी, बाकी मैंने आपको कहा था कॉटन इज अ स्टेपल फाइबर. एस फॉर शॉर्ट, एस फॉर स्टेपल, हम ऐसे याद रखेंगे, राइट? लेकिन सिल्क इज द ओनली नेचुरल फाइबर विच इज अ फिलामेंट फाइबर. फिलामेंट मीन्स दैट इट इज अ लॉन्ग फाइबर, अप टू 18 इंचेस की लेंथ से लेकर अप टू मीटर्स तक हम इसकी लेंथ इजिली निकाल सकते हैं. तो अब सिल्क की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हुई, है ना. द चाइनीज न्यू अबाउट इट. ये जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, ये प्रिंसेस थी 14 साल की, है ना, जो कहानियां कहती हैं कि इसके कप में गिर गया. और चाय पीते हैं आप सब? चाय अभी मैं थोड़ी देर में, हाँ, आई एम सिटिंग बिटवीन यू एंड योर टी, बस हम जल्दी करके फिर आप चाय पी सकते हैं. तो इनकी चाय में सिल्क जो प्रिंसेस थी जस्ट 14 साल की, इनके ककून गिर गया. यस, मलबरी ट्री के पास बैठी थी और ककून गिर गया, एंड शी ऑब्जर्व द प्रोसेस कि वो कैसे खुला, राइट? और फिर कहते हैं कहानी ऑफ सिल्क स्टार्टेड. इट वाज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट. जो देयर इज अनदर स्टोरी के 2 मॉन्क्स फिर स्मगल करके लेके आए, है ना, सिल्क रूट से. सो सेरिकल्चर, एज मैम ऑलरेडी मेंशन्ड, आई थिंक सो नीलिमा मैम ने बात की थी कि सेरिकल्चर क्या होता है ना. इट इज अ होल साइंटिफिक प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहां बेसिकली सिंपली पुट हम क्या कर रहे हैं, कोकून्स को पाल रहे हैं, उनको बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि हम उनका फिलामेंट जो है वो इस्तेमाल कर सके, राइट? सो सबसे पहले जो हमारे इंडिया में 4 तरह के सिल्क बेसिकली हमें मिलते हैं, है ना. एरी, मूंगा एंड योर मलबरी सिल्क, राइट, एंड योर टसर सिल्क, जो वाइल्ड सिल्क. वाइल्ड सिल्क जो है ओक के प्लांट्स पे उगता है. ओक ट्री, बहुत बड़ी बड़ी ओक ट्रीज होती है, उनके ऊपर उगता है. खैर अभी इसको भी थोड़ा कमर्शलाइज किया जा रहा है, बट वहां पे उगता है. पर जो ये हमारा मलबरी प्लांट्स वाला है, जैसे जसप्रीत मैम ने बोला कि हमारे पैन इंडिया में देयर आर सो मेनी सेंटर्स केटरिंग टू सेरिकल्चर. तो जो कीड़ा लिया जाता है, जो जूलॉजिकल पार्ट इसका है, दैट इज बॉम्बैक्स मोराई. तो इस कीड़े को लिया जाता है और उसको मलबरी के ट्रीज पे, शॉर्ट हाइट ट्रीज मेंटेन की जाती है, और 3 से 4 फुट के ऊपर नहीं ग्रो करने दिया जाता है, बिकॉज इट इज इजी टू हैंडल. सो इनको रेयर किया जाता है और इनको पाला जाता है, और इनके आप सामने पूरा लाइफ साइकिल देख रहे हैं, राइट? इनके एग्स को हैच करते हैं, मॉथ्स की पेयरिंग होती है ना, सिल्कवर्म्स फीड करते हैं. फिर सिल्कवर्म जब अपना कोकून बना लेता है, हम उस स्टेज पे उसको गर्म पानी में उबालते हैं, एंड वी सेपरेट द थ्रेड फ्रॉम द गमी मटेरियल. इसके अंदर व्हेन आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड आई विल एक्सप्लेन क्या होता है. और फिर हम उसकी रीलिंग एंड स्पिनिंग करते हैं, राइट? और डीगमिंग कई बार करते हैं, फिर उसकी दोबारा वेइंग करते हैं. डीगमिंग इज उसकी गम रिमूव करना, और वेइंग करना उसमें दोबारा वेट करना. आप जब सिल्क खरीदते हैं ना, आप कहते हैं ना 40 ग्राम सिल्क, 60 ग्राम सिल्क, 80 ग्राम सिल्क, राइट? सो इट इज एडिंग वेट टू इट, ताकि उसमें थोड़ी हैंग हो, बाउंस हो. सो ऑफ कोर्स डाइंग एंड प्रिंटिंग तो है ही है. ये देखिए, ये आपका मिस्टर बॉम्बैक्स मोराई. यस, ये कीड़ा है, ये खूब खिलाया जाता है, इसको मोटा किया जाता है मलबरी लीव्स पे. देयर इज अ होल ऑर्गेनाइज्ड small kind of industry, small scale industry, which is catering to this field, and lots of women are getting employment here. और ये हमारा कोकून है.
ये सिल्क मॉथ के माउथ से वो सिक्रीट करता है. इट्स अ प्रोटीनिक फाइबर, सेरेसिन एंड फिब्रोइन, राइट. सो जो गमी मटेरियल है वो इसको बाइंड करता है और ये हमारा कोकून बन जाता है, हार्ड कोकून. अगर ये कोकून खुद फट के बाहर आ जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मॉथ, ये बटरफ्लाई का कजन है, राइट. सो व्हाट विल हैपन, तो जो उस फटे हुए कोकून से हमें सिल्क मिलेगा उसको हम कहते हैं स्पन सिल्क. क्वालिटी खराब हो गई क्योंकि अब वो लंबा धागा, जो ब्यूटी थी सिल्क की, लंबे धागे की वजह से शाइन है, ग्लैमर. आई एम वेयरिंग सिल्क टुडे, अच्छी लग रही हूँ ना मैं. सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट शाइन एंड दैट लस्टर ऑफ सिल्क, है ना, दैट वी हैव. सो दैट ब्यूटी and the jewel tones of dyes that we get on this. पर इसको फटने नहीं देना है, तो क्या करते हैं ये लोग डोमेस्टिक जो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सीन, व्हाट दे डू इज ये सॉर्टिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, पहले क्वालिटी वाइज इनको सेपरेट कर रहे हैं, फिर इनको गरम गरम खौलते पानी में. अभी और भी बातें आ गई हैं इसमें, बहुत बात की जा सकती है अहिंसा सिल्क की, यस, कि ये ना किया जाए ऐसे, इनको किल कर रहे हैं बिकॉज हम कीड़े को, बट आई विल नॉट डील विद दैट एस्पेक्ट. सो इसमें कीड़ा अंदर ही मर जाता है और इसका गर्म पानी की वजह से जो गमी मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है एंड सेरेसिन एंड फिब्रोइन हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं. द प्रोटीनिक फाइब्रोइन इज सेपरेटेड, राइट. और फिर ये हमने सेपरेट करके, ये ऊपर देखिए आप रीलिंग हो रही है, ये हमारी आजकल की मैकेनाइज्ड सिस्टम में जो रीलिंग हो रही है, राइट. एंड जो पुराना सिस्टम है वो देखिए, वो मैंने एक सेकंड जो पिक्चर है उसमें पुराने सिस्टम में कैसे उसको रीलिंग की जाती थी ऑन अ क्रूड सिंपल मशीन. Yes, so it was the beauty of the science was on that simple machine, how that same work was being done. और आप जो थर्ड पिक्चर देख रहे हैं उसमें द गोल्डन सिल्क, द टसर सिल्क की मैंने एक पिक्चर डाली है जिसकी मैंने बात करी थी. एंड कमिंग टू दिस, ये 100 साल पुरानी जम्मू कश्मीर की फैक्ट्री है पहली पिक्चर में, जहाँ पे स्लाइट मैकेनाइजेशन है. देयर इज अ साइंस बिहाइंड द रीलिंग इंडस्ट्री, दिस रीलिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क. वेराज ये नॉर्थ ईस्ट की जो दूसरी पिक्चर है, आप देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था ना, मैं आपको दिखाऊंगी कितना क्रूड सिंपल मशीन लाइक अ व्हील, है ना. अभी भी हम व्हील यूज कर रहे हैं. आदमी, वो जो कहते हैं ना फर्स्ट इन्वेंशन वाज द व्हील, अभी भी वो काम आ रही है. यस, तो बच्चों की साइकिलिंग में ही नहीं बल्कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इट इज अ ग्रेट help. And then Telangana as pan India, they have their own set of, वही wheel है लेकिन दूसरी साइड पे रीलिंग की मशीन दूसरे तरीके का व्हील है. देन भागलपुर, इट इज बिहार में है, इट इज नोन एज द सिल्क सिटी. वहां पे ये वीविंग का प्रोसेस दिखाने की कोशिश मैंने की है. इसमें भी लूम्स बहुत तरीके की हैं, जैसे पिट लूम्स होती थी जिसमें नीचे अंदर जहाँ गर्मी है, तो साइंस क्या कहती है कि ठंडक में आराम से बैठ के नीचे बात की काम किया जाए. नाउ अबाउट सिल्क, कि सिल्क से बनता क्या है ना. अभी हमारा धागा तैयार हो गया, हमने वीविंग करनी है. Look at the price of these. Can you see? Can somebody tell me कितने की है ये इक्कत की? डबल इक्कत लिखा हुआ है, डबल इक्कत एंड देन सांबलपुरी इक्कत. कितने की है ये साड़ी? मेरे पास अभी तक नहीं है. I cannot afford it. It's 1,05,000 only and 2,00,000 something only. I mean, but क्यों चार्ज किया जा रहा है? Why? Can you see the process? जो इकट इज कैलकुलेशन. अभी मैम कह रहे थे मैथ्स एंड साइंस बताइए. हाँ, ये डिजाइन देखिए आप, इंट्रिकेट. आई गो टू द बैक स्लाइड. ये देख रहे हैं आप, जो नर है ना लिखा हुआ है इसके ऊपर, नर, नारी कुंज, भरत कुंज, पैरट, पोपट होता था बोलते हैं. ये गुजरात का है, पटोला. सो इक्कत इंडिया में 3 जगह होता है. गुजरात का सबसे फेमस है और सबसे महंगा है क्योंकि यहाँ डबल इक्कत होता है. नेक्स्ट नंबर पे सांबलपुरी या उड़ीसा का इक्कत है. सो ये जो इक्कत है, ये जो मैं बात कर रही हूँ डबल एंड सिंगल इक्कत, ये क्या है? पहले तो हम समझते इक्कत है क्या. इक्कत इज टाई एंड डाई, लेकिन थ्रेड का. अभी हम टाई एंड डाई समझते हैं, बंधेज है ना, हमारी बंधेज की गुजराती हमने सबने देखी है, वो टाई एंड डाई की साड़ियां, दुपट्टे, ओढ़नियां हमने सबने ली हैं. तो वो सरफेस पे फैब्रिक को बांधा जाता है. लेकिन यहाँ इक्कत में क्या हो रहा है? बिफोर वीविंग
धागे को कैलकुलेट करके बांधा जा रहा है कि जब वो दूसरा धागा आएगा, राइट, अगर सिंगल इकत होगा तो जब दूसरा वाप या वेफ्ट का धागा आएगा, वेफ्ट सिंगल इकट भी होता है, वाप सिंगल इकट भी होता है, तो अगर मैंने वाप के धागे, जैसे ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, ये वाप के धागों को गिन के बांधते जा रहे हैं और फिर एक कलर में डाई करेंगे, जहां व्हाइट रखना है उसको व्हाइट रखेंगे, फिर नेक्स्ट कलर में डिप करेंगे, फिर उसको बांधेंगे, फिर तीसरे कलर में डिप करेंगे, फिर उसको बांधेंगे, अप टू 7-10 कलर्स आर देयर, यू नो, सो हम इसको प्रोग्रेसिवली बांध रहे हैं। एंड द मजेदार थिंग, द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज व्हाट हैपेंस जब हम इसको दूसरी तरफ से धागा आएगा, वो परफेक्ट मिस्टर पोपट बन जाएंगे, वो पैरट तैयार है, आई मीन, एंड इट हैज दैट हेजी ब्यूटी, राइट, या मिस्टर एलिफेंट इज देयर, राइट, जो गज बोलते हैं, है ना, इनकी भाषा में, सो वो तैयार है वहां पे। और डबल इकट, अब ये 1 लाख क्यों चार्ज कर रहे हैं, डबल इकट को समझते हैं। मैंने वाप के धागे को भी बांधा प्रोग्रेसिवली, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर परफेक्शन है, ये देखिए कितने छोटे छोटे डिजाइन है, कितने बारीकी से बने। तो ये जब मैं इसको दोबारा इधर वाप के धागे को बांधा, इधर मैंने वेफ्ट के धागे को भी बांधा, और वो करेक्ट एक जगह पे क्रॉस होने चाहिए और वो फॉर्म करेंगे एग्जैक्ट डिजाइन। तो वो जरा सा भी मोर की चोंच इधर की इधर नहीं हो सकती और उसका पंख इधर का उधर नहीं हो सकता। So it is all based on beautiful calculations. Can you imagine? हम कहते हैं इंजीनियरिंग मार्वल है जी, है ना, सैटेलाइट भेज दी, मैं तो कहती हूँ ये कोई कम है। Look at the science behind it, the calculations behind it, the perfection behind it. तो एम है हम सब 1 लाख की साड़ी एक बार जरूर खरीदेंगे टू encourage these artisans, you know, because there is so much of calculation and science behind the perfection. So ये डबल इकट के बारे में, you know, ये देखिए ये बनारसी ब्रोकेड्स हैं, हम आजकल जकार्ड्स की बात करते हैं, है ना, जकार्ड पे बन गए जी इतने कलर्स वाला, इतना वो आ गया, है ना, विद इन मिनट्स बन गया। अभी ये आप थर्ड पिक्चर देखिए, इनके सामने बहुत सारे आपको कलर्ड धागे दिख रहे होंगे। ऐसे ही शॉल्स भी बनते हैं श्रीनगर में, जिनको हम अम्बली शॉल्स बोलते हैं, या आप I'm forgetting the name, I'll come back to this. ये ब्रोकेड्स जो आप बनारसी जो थर्ड पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो बन रहे हैं ये धागे अलग अलग रंग के, तो हर पॉइंट पे, जैसे मैंने आपको कहा, 1 सेंटीमीटर 1 इंच बस, और ये एक लूम पे 2 या 3 लोग बैठते हैं, राइट, और परफेक्ट इनके सामने ग्राफ होता है, और एक ग्राफ रीड करने वाला ऊपर लड़का छोटा सा बैठा होता है जो ट्रेनी होता है, अप्रेंटिसशिप। तो साइंस के साथ साथ पूरी मैनेजमेंट भी है, और वो बैठा होता है और ऊपर से मैप को बोल रहा है, और वो मैप के अकॉर्डिंगली ये एग्जैक्ट कलर धागे का चेंज हो रहा है। उसी लाइन में आप सोचिए इतना बड़ा पल्ला है साड़ी का, राइट, उस पल्ले में कहाँ बूटी आनी है, कहाँ चोंच आनी है, कहाँ पंख आने हैं, कहाँ पैर आने हैं, वो सब कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये देखिए आप नंबर ऑफ तीलियां जो इनके पास पड़ी हैं। जो मैं शॉल आपको बोल रही थी कश्मीर के कानीकार शॉल, उसमें कानी, कानी मीन्स आंख नहीं है ना, कानी हम समझते हैं, तो वो नीडल्स जो यूज होती हैं वो कानी है, मीन्स उनके ऊपर होल नहीं होता, तो ऊपर तीली के बांधा होता है। तो ये ऐसे ही उसमें भी रंग बदले जाते हैं। हर वहां आई हैव पर्सनली व्यूड, they 2 people sit on the loom and just make this small amount of a perfect flawless scientific तरीके से बना हुआ ग्राफ रीड करके, which can be replicated again and again, and उसके जो color combinations हैं they are like class apart. Yes, so ये बनाया जाता है, so weaving की जाती है। Again we come to quality assurance, जरूरी है। सिल्क में तो भाई इतने पैसे देने, तो क्वालिटी अश्योरेंस तो चाहिए ही है। 1 लाख खर्चना है ना, तो अगली बारी सॉलिटेयर नहीं लेंगे, इकत लेंगे, डबल इकत। सो वी हैव टू बाय प्योर, वी हैव टू बी श्योर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिल्क मार्क भी क्रिएट किया है। कैन यू सी द बटरफ्लाई काइंड ऑफ creativity in that to represent the moth, the silk moth. And can somebody tell me who is the brand ambassador of India for the silk mark, for the silk? Anybody? कौन सबसे सुंदर साड़ियां पहनते हैं? Anybody can write in the chat box if the students. मैंने कहा थोड़ा बोल बोल के मैं थक गई हूँ, आपको चांस दूं।
एनीबडी जिन्होंने अपनी शादी में भी बहुत सुंदर कांजीवरम साड़ी पहनी, एंड शी इज नोन फॉर हर कलेक्शन ऑफ साड़ीज? रेखा नहीं है, कोई और है? Yes, ma'am. There are some answers coming up. Vidya Balan. Oh yes, awesome, awesome. मेरी तरफ से एक आपको लवलीन जी, इस बच्चे को हम टॉफी भिजवाएंगे, चॉकलेट, सॉरी टॉफी का जमाना नहीं है. So chocolate, it is Vidya Balan and she's known and she's the brand ambassador, right? तो सिल्क मार्क को वो प्रमोट करती हैं. जहां पे भी गवर्नमेंट का एक्सपो लगता है, जो मैम जहां जाते हैं, जसलीन मैम, सॉरी जसप्रीत मैम लेने, तो वहां पे ये सारे मिलते हैं हमको क्वालिटी एश्योरेंस. नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइबर विच इज वूल. यस, अब ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये है हमारी पश्मीना गोट. जो आप देख रहे हैं, लंबे लंबे कितने सुंदर बाल हैं इसके, राइट? कैप्रा हर्कस, यस, दैट इज द zoological नेम. और ये कोल्ड अपर हिमालयन रीजन्स में रहते हैं, ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर में एंड इवन तिब्बत में ऊपर, राइट? लद्दाख हमारा बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे हम ये, और इनकी अंडर फ्लीस जो है वो हम लेते थे. अभी क्या है, इससे पहले जो हम वूल लेते थे विच वाज द रिंग शॉल. कैन एनीबडी टेल मी, रिंग शॉल में जो शाहतूश है वो कौन से एनिमल से वूल लिया जाता था? Any idea? If in the chat box, kids, you can write. एक चॉकलेट और है मेरे पास. Any answers, Lavleen ma'am? Can you see any answers? Yak is there. Somebody has written yak. याक की टॉफी मिलेगी, चॉकलेट नहीं मिलेगी. Not the yak. Sheep. I think Nilima ma'am can answer this. Yes, there's an answer from ma'am itself. Tibetan chiru antelope. Yes, it's an antelope. chiru है ना, ibex जिसको हम बोलते हैं, और आम भाषा में chiru बोलते हैं. खैर अभी ये बैन हो गया है. Thank you ma'am, you were a storehouse and encyclopedia in science. तो हम तो just एक humble कोशिश कर रहे हैं. So thank you for that answer. और आपको भी चॉकलेट जरूर मिलेगी मैम. जी. So this वो रिंग शॉल था, इतना फाइन और इतना गरम, जो कि रिंग में से निकल जाता था, राइट? तो वूल में भी वही क्वालिटीज हैं. और जैसे हमने कहा कि वूल की अलग प्रॉपर्टीज हैं. अभी तक जो हमने कॉटन की बात की, और वूल एंड सिल्क आदि एनिमल फाइबर्स, इनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं. इवन डाइंग में, जैसे मैं वहां आपको बताना भूल गई, सिल्क में जब हमने डाइंग करनी है तो हमें एसिडिक डाई बाथ चाहिए, तब अच्छी सिल्क की डाइंग होगी. तो ये नेचुरली हमारे जो आर्टिजन्स थे उनको पता है, एंड दे मेक द डाई बाथ एसिडिक बिफोर डाइंग इट. सो ये आप देख रहे हैं. मैंने आई वुड लाइक टू ऑल्सो हियर से कि जो ऑल दीज पिक्चर्स I acknowledge the resources from where I have picked up, and they are all subject to copyright, so I acknowledge their contribution for this thing. And so ये Directorate of Sheep Husbandry से है. First step of wool is shearing, और इसमें कोई पेन नहीं हो रही है एनिमल को. इट इज अ प्रॉपर मेथड विच इज यूज्ड, जिसमें स्प्रिंग सीजन में इनको शेयर कर लिया जाता है. और जो अंडरकोट है, बेली का जो पेट का हिस्सा है, और ये गर्दन वाला हिस्से से हमें बेस्ट और सॉफ्टेस्ट वूल मिलता है, राइट? देन स्पिनिंग, वीविंग, जो हमने पहले सारे प्रोसेसेस किए वो भी इसमें होते हैं, पर इसमें कार्डिंग एंड कोम्बिंग बहुत जरूरी है. आप ना ये जो मेन है बहुत खराब हैं, हमें बोलते हैं लेडीज ने सिल्क की साड़ी पहनी हुई है और मतलब इनको ठंड नहीं लगती है. कैन वी कम टू द साइंस बिहाइंड इट? क्यों हमें ठंड नहीं लगती है, और उन्होंने क्या पहना होता है और उनको फिर भी ठंड लगती है, जबकि उन्होंने कार्डेड वूल पहना हुआ है. देखिए, कोम्बिंग है एक वूल की, और एक कार्डिंग है, सुपर कोम्बिंग. तो जो उनके वूलन सूट्स है ना, वो कोम्बिंग से बने, वूल से बने. सो वो तो ऑफ कोर्स उनको वार्म रख रहे हैं, लेकिन हम लेडीज पे गलत एलिगेशन है. कोई बता सकते हैं कि हम क्यों वार्म है? उस समय हमने सिल्क की साड़ी पहनी है, तो हम वो क्या बोलते हैं, फैशन कर रहे हैं और whatever. हम क्यों वार्म है उस समय? क्योंकि सिल्क इज अ, जैसे हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, एस्थेटिक्स के नेचुरल इंसुलेटर है, जो हमारी हीट को ट्रैप करके रखता है अंदर. सो वूल इज ऑल्सो अ नेचुरल इंसुलेटर. सो आर एंशियंट्स न्यू कौन से टाइम पे कौन सा फैब्रिक पहनना है. I need to rush through actually.
मुझे लग रहा है आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो स्पिनिंग एंड वीविंग है. देन हम आ जाते हैं अगेन सस्टेनेबिलिटी पे. ये वूल में एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फेल्टिंग. फेल्टिंग इज हमने टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, 3 चीजें दी तो वूल का जो स्ट्रक्चर है स्केली स्ट्रक्चर है, वो स्केल्स आपस में लॉक हो जाएंगे एंड परमानेंटली आपको विदाउट वीविंग, without going from the all the steps, धागा बनाना and then कपड़ा बनाना, from fiber to direct fabric पहुंच जाएंगे. ये जो आप पहला देख रहे हैं ये गब्बा है, तो फ्लोर कवरिंग की तरह यूज किया जाता है. इंग्लैंड में इसकी हैट्स बनती हैं, है ना. तो हमारे यहाँ हम फ्लोर कवरिंग की तरह यूज करते हैं. और गब्बा और नमदा में क्या फर्क है? नमदा इज योर सस्टेनेबिलिटी, गब्बा सॉरी इज योर सस्टेनेबल, जिसमें रिसाइकल किया जाता है. ओल्ड ब्लैंकेट्स को रिप ऑफ करके फाइबर फॉर्म में लगा के बनाया जाता है, जबकि नमदा हमारा न्यू फाइबर से बनता है. अगेन क्वालिटी, we are conscious about quality. So ये जो दिखता है simple first wool mark is the mark of 100% new wool. We have to remember this. The second, जिसमें आप black का portion देख रहे हैं, that signifies 50 to 99% new wool, and the third is 30 to 50%, 49% new wool. So we need to understand the marks. Yes. So now coming to the aesthetics and function. हम कोई ड्रेस जो ट्रेडिशनल हमारी बनती थी उसके पीछे लॉजिक था. अब आप देखिए जो पहली ड्रेस है इसने फिरन पहना है, छोटी सी प्यारी सी लड़की ने. फिरन के साथ शी इज होल्डिंग समथिंग. व्हाट इज दैट? इट्स अ कांगड़ी, राइट. तो ये हीट करते हैं अपने आप को, तो उसकी डिजाइनिंग फिरन की ऐसी है कि ये अंदर ले जाया जा सके गारमेंट के, राइट. और आप जानते हैं कि वूल की प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग है, अगर इसमें आग भी लग जाती है तो बुझ जाता है, राइट. और इंसुलेटर तो है ही है. प्लस डिजाइनिंग ऑफ द गारमेंट ऐसी की गई कि उसमें ये जो आप कांगड़ी अंदर लेके जा सके, आप बाजुए अंदर कर लेते हैं वो लोग और अंदर पकड़ते हैं. सेकंड इज जो वार्म कुर्ता, चादरा, पगड़ी जो हम पहनते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, अकॉर्डिंग टू द रीजन. यस, एंड इट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कुड वेयर. थर्ड आप देखेंगे कोली वुमेन है जो मछुआरन है, उसने साड़ी कैसे बांधी हुई है? बिकॉज इट्स फंक्शनल, उसको पानी में उतरना है. सो द टाइंग ऑफ द ड्रेस, देयर इज ऑल्सो अ साइंस एंड प्रॉपर सिस्टम बिहाइंड इट. द थर्ड, ये मैंने सब्यसाची की चोली ली है, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल कटोरी ब्लाउजेस हैं या चोली ब्लाउजेस हैं, उसमें हमारे बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, टू मेक अस लुक गुड, हमें फाउंडेशन गारमेंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ड्रेस की कटिंग एंड डिजाइनिंग ही ऐसे की गई ट्रेडिशनली कि हमारी बॉडी को सपोर्ट या केयर मिल सके. These are the various turbans, be it royalty, be it the common man, everybody wears it. और गर्मी में हमें गर्मी से बचाते, धूप से बचाते, और सर्दियों में हमें ठंड से बचाते हैं. ऑफ कोर्स दे, अब राजस्थान में देयर इज नीरस, गर्मी, धूप, तो ये कलरफुल पगड़ीज हमारी लाइफ को ब्राइटन करती हैं. द एस्थेटिक्स ऑफ कलर and the understanding of the environment and ecology with our that science is also being applied to clothing, right? So sarees ke upar there is an endless talk. There, each region of India has its own saree, the way of tying it, the material used, the fabric used. I'm running short of time, so I'll just run through the PPT. So ye sara हर रीजन की अलग अलग साड़ी है. आप, आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू लवलीन मैम, यू कैन शेयर इट विद द रिस्पोंडेंट्स, राइट. दे कैन गो इन डेप्थ लेटर. ये साड़ी जो मैं आपको कह रही हूँ, वेरियस ड्रेप्स हैं हर जगह की, हाउ टू टाई देम कन्वेंशनली, उनको कैसे फायदा देती हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एंथ्रोपोमेट्री. सो हमने बात की कि हमारी बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, राइट. तो उसमें मेजरमेंट, सबसे पहले तो जो इक्विपमेंट यूज हो रही है, आपकी जो मेजरिंग टेप, जिसको इंच टेप हम बोलते हैं, राइट, वो साइंटिफिकली कैलिब्रेटेड है. जो हमारा एल स्केल, टी स्केल, हम जो भी इक्विपमेंट इसमें यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल साइंटिफिकली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. एंड देन वी गो ऑन टू परफेक्ट साइंस है कि कितनी वेरिएशंस हैं. एंड I mean, will you believe, ये जो आपने थर्ड फोटोग्राफ देख रहे हैं, द मिसी, द पेटीट एंड द वुमेन साइजेस, ये यूरोपियन साइजेस की बात कर रहे हैं हम. तो मैं इंडिया में, आई एम अ मीडियम साइज, मीडियम,
But in America, I'm a size petite. मैं छोटी हूँ उनके हिसाब से, right? So I'm a petite size because Europeans are tall and strong, and they have African, and Hispanics over there. But the Asian community, we come in the petite sizes. So ये standardization of sizes हुई हमारी. पहले हमारे जो साइजेस थे हमारे, ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली जो गारमेंट्स थे उसमें हमें खास जरूरत ही नहीं थी एंथ्रोपोमेट्री की. आप देखिए साड़ी को मैंने पिछले उसमें दिखाया, 1000 तरीके से बांधा जा सकता है. वही 6 गज की साड़ी, 5.5 मीटर की साड़ी कितने ही तरीके के ड्रेप से बनाई जा रही है, और उसमें चोली पहन ली या अंगिका बांध ली जाती थी और उसको पहन लिया जाता था. चादरा था मेन का, पगड़ी थी, वो भी हर एक ने अपने अपने उसमें हमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं थी. बट जैसे ही हमारी फॉर्मल ड्रेसिंग आई तो हमें एंथ्रोपोमेट्री की जरूरत पड़ी. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमारे चोली कट ब्लाउजेस, हमारे अदर थिंग्स में ऑफ कोर्स साइजिंग थी सारी, देयर वाज अ प्रॉपर साइंस. और अब इंडियन साइज स्टैंडर्डाइजेशन भी आती जा रही है. आई हैव टेकन दिस रितु कुमार्स साइज, बट आई डोंट नो somehow maybe she caters to the women with money. So women with money have bigger age groups. So मुझे लगता है उनका भी मैं small size ले पाती हूँ, जबकि रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स, जैसे दूसरा ब्रांड मैंने लगाया हुआ है बीबा, उनका हम मीडियम ब्रांड में आते हैं, राइट? सो I'm sorry. So I mean, so we have to see कि standardization India में अभी तक भी एक general country level पे standardization नहीं हुई है. So, but company to company, there are brands like Biba, and all the these designer brands have their own standardization which they are following. अगर हम shoe sizes की बात करें, तो if we are an American, US size, Europe size, UK size, so if I'm size UK 5, then in America I would be UK, I would be a size 7. So we have to understand this when we are buying, and there is a proper system behind this whole anthropometry, right? Now coming on to the last part of the presentation, we will talk about, जैसे मैम ने बताया ऑलरेडी, नीलिमा मैम ने, these are the smart textiles, right? जिनको आप देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो आपके सेंसर्स, आपके बीपी, आपके टेम्परेचर, हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं. मैम ने नैनो टेक्नोलॉजी की बात करी थी. देयर आर लेयर्स ऑफ नैनो फाइबर्स, जिसमें आप एंटी ओडर वाले एलिमेंट्स डाल सकते हैं, परफ्यूम वाले ओडर डाल सकते हैं, आप फिनिश दे सकते हैं जिससे आपको स्मेल्स नहीं आएंगी, या आपकी फिनिश अच्छी रहेगी, आपको रिंकल फ्री मिलेगा, वाटर रेपेलेंट फैब्रिक मिलेगा, उसमें स्टैटिक बिल्डअप नहीं होगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. And there are technologies coming जिसमें हम क्या करेंगे, we can print our clothes. I mean like a 3D printer, जैसे आप अपने कपड़े को आप पेपर को प्रिंट कर लेते हैं, फोटो कॉपी निकालते हैं, इसी तरीके से you can print your own clothes as per your own design. आपने the best example of smart textiles is your your third picture that you would see, the astronauts that they wear, they have chips fed into their this thing, cameras fed into their dresses, and temperature regulators, everything is inbuilt into their system, even their water needs are filled in. So technical textiles mein there are various kinds of textiles like agrotech, dealing with your agriculture, build tech, cloth tech, geotech, your home tech, indutech, sport tech. So all kinds of textiles. अब ये जो मैंने एक बड़ी picture करके लगाई है, why? Because we used to have these heavy plasters जो हम सब ने, मेरे को लगा ये बहुत relatable picture है, तो भारी सा plaster लग जाता था अगर fracture हो जाए. But now this thing technology is there, which is a very lightweight fabric which we get. So this is what we are moving on to. The Loveleen ma'am, I think I have overshooted the time. Do we have time for questions? Okay. So please carry on, ma'am. Okay. So
so these were the different types of textiles. So agar मैं इसको, now that I have been told I have a few minutes, so agrotech में क्या है, जैसे आपके animal keeping है, apiculture है, bee keeping है, उसमें specialized fabrics, fibers लगाए जा रहे हैं. आपको पता है कि bees नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, है ना. So specialized fibers are there. Build tech में industrial buildings में, roads के अंदर, जैसे आप मैम ने शुरू में बात की कि Nike and all, these are all sustainable companies. So अभी जो हम हमारी पेट बॉटल्स हैं, उनको भी नाइकी आपको फाइबर निकाल के they are inserting into our dresses. So you have denim jeans which are made from your Coke, Coke or Pepsi or whatever drinks bottle that you have. So you are being sustainable. So इसी तरीके से garments में, shoes, your shoes will never stink. Such a technology is there, right? And जियोटेक में जैसे मैंने बात की, आपके जो भी रेलवेज, इरिगेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी ऐसी रोड्स बनेंगी विद द हेल्प ऑफ दीज फाइबर्स जो इसमें इंसर्ट किए जाएंगे, विच आर नेवर गोइंग टू ब्रेक, राइट. सो होम टेक में है, इंटीरियर्स में है, आपके कार्पेट्स में, यू डोंट हैव टू लॉन्डर देम एट ऑल. आई मीन यू जस्ट हैव टू, दिल बी सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज वाले fibers. Then there are like technologies, आप party में गए, you can just change the color of your dress. I mean, with the switch of a button, you can just, change your dress, how it looks, if you don't like the particular industry. Then aesthetic leisure, the sports industry में क्या हो रहा है, athletics को training दी जाती है. So monitors लगे हुए हैं, उनका heart rate, pulse rate, किस time पे वो speed up करते हैं, ये sensors लगे हुए हैं उनकी dress में. So वो बताएंगे उनको कि when they are how their performance can be improved. So with the help of these second skin kind of clothings, which are monitoring all their vitals. So so this was all about the gist of how traditionally we are into how our traditional forefathers, they knew all about science, and we must hold on to that knowledge and strengthen it and document it and not lose it in our race. And we are all realizing it, coming back to our roots. So if there are any questions from your side, you're most welcome. Naveen ma'am, if you can see any questions in the chat. Not yet. Any Students, questions, please? Yeah. You may If please somebody raise your hands or just inbox your question. Yeah. Ma'am, Harpreet ma'am, please unshare your screen. Yeah, I'll stop sharing, right. And yes, if students, you have any questions, please let us know in the chat box or you raise your hand. I think there are no questions. So, Okay, there's one question. what about the application of 3D printing in textiles? Yes, 3D technology is a very upcoming field, so that is also individualized color and realistic colors are being given with this technology, and digital printing is there, 3D printing is there. As I told you, I mean, I'm not a master in this particular technical textiles, but I can tell you it is definitely an upcoming thing where we can create a pattern of, flower, as in a flower looks naturally. So that is an upcoming field. Okay. Thank you, ma'am. And any other questions? I think Damanpreet is raising her hand. Yeah, Parneet is there. Parneet, please unmute yourself. Then there is Muskan Kumari. Ritesh sir, can you please unmute them? They have unraised the hand, ma'am. Unraised them. Yeah. Okay, fine. She's written no, ma'am, right? Okay. So I don't think there's any other question.
Yeah. So thanks a lot, Harpreet ma'am, for a wonderful session and for sharing your shared knowledge with us. And now it's time to propose vote of thanks, and I request Dr. Loveleen Brar to propose vote of thanks too. Thanks. Thank you, Kamaljeet. Honorable Chief Guest, Director General Madam, Dr. Harpreet, and my dear participants. It is a privilege to propose vote of thanks. On behalf of Science City, I express my sincere gratitude to Madam Jaspreet Talwar, our Chief Guest, for sparing time from her busy schedule in gracing this occasion. Thank you so much, ma'am. My sincere thanks to the respected Director General Madam Dr. Nilima Jairath for her constant support and motivation. I would like to thank our distinguished speaker, Dr. Harpreet, for making an excellent presentation and making this webinar meaningful and interesting. Thank you so much, ma'am. I have been fortunate enough to be backed up by a team of very proactive staff of our institution who are well versed within their jobs. Their names definitely needs a special mention here. Thank you, Kamaljeet, Manpreet, Kanika, and Nitin. My special thanks to the technical team led by Mr. Ritesh Pathak. Thank you so much, sir, for this flawless platform. My hearty thanks to the participants for being with us today. I hope we have lived up to your expectations. Thanks to all the people who have directly or indirectly helped to make the event successful. Thank you all. Thanks a lot, ma'am. Thank you. And it's time to say bye to you all, and keep watching our website. We are always active, and there are so many webinars and other events coming up. So please keep in touch with us. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Thank you so much. I would just like to ask one thing. Madam Jaspreet has requested for a copy of Madam Harpreet's presentation. Okay, ma'am. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Harpreet ma'am, you mail it to me. I'll share it with Jaspreet ma'am. Yes, yes, I will. I will. And it was really a very wonderful talk. I learned a lot of things. In fact, I was aware of, for example, I was aware of the wool mark, but I wasn't aware of the difference, the nuances between the three wool marks. So that was a good learning today. Gratitude, ma'am. Actually, it was a very vast topic, so I could not, concentrate on one aspect. So I tried to give an overview of the whole, and there are hundreds and hundreds of more textiles which we could have talked about. Yes, of course. Yes. Gratitude, ma'am. Thank you. Thank you, Harpreet ma'am. Thank you. Thank you. Thanks, everyone. Thank you, everybody.